little bit lengthy also. So we have any state psi, and this state is written as A1 phi 11 plus A2 phi 10 plus A3 phi 1 minus 1. And what is phi LM? Phi LM is the common eigenstate of L square and LZ. So basically these are harmonic, these are spherical harmonics. So it is given that if psi is eigenstate of Lx operator. This is very interesting. So this is eigenstate of Lx operator with eigenvalue h cut. Then we have to find the value of A1, A2, A3. We have to find this value. Okay. So what will be this value? So this is your problem. Okay. And yes, A1, A2, A3 is just a real number. So we have to work only for the real number. And psi is also normalized. So psi is normalized. So if it is not normalized, then obviously you have to take it as a another constraint as a normalization. But it is not given that it is normalized, but you have to use this constraint anyway. So how many unknown is there? 3 unknown is there. To solving these 3 unknown uniquely, you need 3 equation. So what will be your first equation? Your first equation is very simple. And that value is equal to A1 square plus A2 square plus A3 square must be equal to 1. आपका first equation तो यही होगा. Everyone is comfortable? Yes? Yes, this is due to normalization. Now, what is given information? The given information is Lx psi must be equal to h cut psi. And this problem was asked into way back December 2014, okay, in the NET exam. So this is one of my favorite question, okay, because it has lot of calculation, it has lot of intuition, everything is there, all drama is there into this story, okay. So this is my story. Now, how we should proceed? So if I am talking about Lx, I don't know anything about Lx individually unless until we are not know every story for L plus and L minus. Are you people agreed or not? Yes. Yes, because we have learned the property of Lx, L plus and L minus only to know the all property of Lx. So my Lx is nothing. That value is equal to L plus L minus by 2. So obviously, we have to know what will happen to L plus to psi. We have to know what will happen when we will operate L minus to psi. And then we can write this Lx, and then we can use this equation to find another equation for A1, A2 and A3. So let's try to do this thing. So first do some homework. And what is this homework? This homework is L plus psi is equal to, what will happen when L plus will go to 1, 1? Anyone? What will happen when L plus will go to 1, 1? 5, 1, 2. 1, 2. No, I 2, 1. कौन अभी कंचन बोल रही थी 2, 1?
नहीं सर, 2 1 नहीं होगा, सॉरी. If you will operate L plus on 511, what will happen? Lakshmi, what will be answer? Very bad, very bad. So Here- it will be 0. That will be Yes, 0. L is equal to M. Here L is equal to M. So you remember when L Yes. plus will operate L and L, that will be 0. So first term will be 0. What will happen when L plus will operate on this? Which state it is going to there? किस state पे चला जाएगा? 1 1 1 1. And what will be coefficient? That will be root 2 h cut pi 1 1. Chalo. What will happen to this one? A3 root 2 h cut pi 1 0. Yes. So this is a story for L plus. And what is the story for L minus to the psi? This one will go to where? A1 root 2 h cut will be there. And this will be phi 1 0 plus A2 root 2 h cut pi 1 minus 1. 1 minus 1. And what will happen to this one? 0. It will be 0. 0. Very good. So if I am talking about Lx psi, that means I am talking about L plus L minus by 2 psi. Yes? है ना? Yes, sir. Yes. So we can write this thing. So what we will do? We will just compile 1 1 separately, 1 0 separately, and 1 minus 1 separately. So 1 1 is there only one thing, and 1 by 2 is there, always there. So that is 1 by 2 is there. So you have root 2 h cut A2 pi 1 1 plus this and this thing can be added. So we can take root 2 h cut and A1 plus A3 pi 1 0 and 1 by root 2 is for everywhere. And next one is what? Root 2 h cut, that is, what will happen? A2. A2, sorry, 1 minus 1. Sorry, this will be A2. Okay, so A2 and this will be okay, A1 and A3. Okay, sorry, A2 pi 1 minus 1. Yes? Yes. Okay. And this value is equal to, if Lx is operating on psi, what you will get? H cut psi, isn't it? So this value is equivalent to H cut. And what is your psi? A1 pi 1 1 plus A2 pi 1 0 plus A3 pi 1 minus 1. Now, what next? You can take this 2 here. You can cancel H cut. What next? Next क्या करोगे? And here is the main catch. सर coefficients equal कर देंगे. Very और good, 100. very good, Kishore. So what you will do, you will just equate the coefficient on both sides. So when you are going to equating the coefficient of phi 1 1, so what will be coefficient into this side? Root 2 A2 must be equal to 2A1. I am just multiplying 2 here. So is that correct? Yes, sir. Yes. Yes. Next, just try to match this one to this one. So again you have root 2 A2 is equal to 2 A3. Last but not the least, you have one more equation. And what will be this equation? Root 2 A1 plus A3 must be equal to 2 times A2.
Yes? Yes, Agreed or sir. not? Yes, sir. Yes. So now, from these two equations, what will be your conclusion? From these two equations, what is your conclusion? Sir, A1 is equal to A3. Very good. The conclusion, first conclusion is A1 is equal to A3. So this is my first conclusion. What is your second conclusion? So here I can put A3 is equal to A1. So I have A1 plus A1 is equal to A2 by root 2, isn't it? So what is your A2? A2 is equal to 2 root 2 A1. So this is my second equation. And third, we can use this one, isn't it? Then we can get the value of A1, A2 and A3. Yes? Yes or no? So then put the Yes, value. sir. So we have A1 square and then A2 square is equal to what? 4 into 2. Isn't it? ठीक लिखा हो ना? सर अपने A1 plus A1 is equal to root 2 A2 होगा सर एक मिनट. डिवाइड करने से A1 plus A3. root 2 A2 होगा. न्यूमरेटर में √2 आता सर. ओके ओके ओके. हाँ तो ये हो गया ना? Just a minute. So this value is equal to root 2 A2 and here A1 is equal to, so A2 is equal to root 2 A1. root 2 A1. Sorry. A2 is equal to root 2 A1. So this will be not there. Root 2 A1. Okay, good. So A2 के जगह पर क्या लिख दें? 2A1 square plus A1 square must be equal to 1. So what is your value? So 4A1 square is equal to 1. So A1 can be plus minus half. है ना? A1 can be plus minus half. But and now after then you have to just go and see the 4 option. So in the 4 option they are just matching the correct answer when we are taking it positive. So A1 is equal to A3. So you have A1 is equal to A3 is equal to half. And after then, what will be your A2? A2 is must be equal to what? A2 is equal to 1 by root 2. Root 2. So this will be your answer. And now every information of angular momentum algebra will be come into this problem, isn't it? है ना? And look at how much calculation you have to do in a very patience form. यहाँ भी देखो मैंने अभी मैं करके आया था फिर भी मुझसे यहाँ पर एक गलती हो गई है ना. So always try to do your problem with full of patience, है ना? आपके एग्जाम में ऐसा नहीं है कि जाओ और जाकर के टिक करो. You have to do it with full of patience. And this question is one of the favorite question, my favorite question ever asked in your exam. So please do practice, है ना? इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए. Okay, let's try to go for next one. This is one of the also very nice problem. Let me give you. So this is in JEST exam. This is from JEST exam. Okay. So I will just write the complete question such that you can do the revision. So this will be in JEST 2018. JEST 2018. Wonderful problem. What is this? This problem is just your psi is given and this is given as 4 upon root 3 pi cos square phi. Okay. 4 upon root 3 pi cos square phi.
So this problem was just in this problem it is asked if Lz is nothing but the z component of angular momentum. If Lz is measured on psi, what will be measurement? What will measurement with what probability? With what probability? With what probability? So this is a very wonderful problem. Okay. So obviously this is your psi. So if you are talking about Lz, what do you have to do? आपको करना क्या होगा? You have to write your psi in a basis of eigenstate of Lz. Yes? Yes. तभी तो आप प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर पाओगे और बाकी सारी चीजों के बारे में बात कर पाओगे. You have to just check. This psi is written in form of cos square phi, but in a basis of eigenstate of Lz, what are that particular value of m? So can I write this particular psi as root under 4 upon 3 pi, and this cos square phi I can write as half, sorry, this will be half 1 plus cos 2 phi. लिख सकते क्या? Yes or no? Yes. लिख सकते हैं. Okay. Now, can we write this all thing as root? So you can just write 1 upon root 3 pi and e to the power I 0 phi plus e to the power I 2 phi plus e to the power minus I 2 phi by 2. लिख सकते क्या? Now, is that these all are normalized or not? ये जो हमने लिखा है वो normalized basis में लिखा है या नहीं? Orthogonal तो है, because when m is not equal to n, you can check that will be orthogonal. But normalize, what will be normalization constant? What will be normalization constant, Kishore? सर हर एक टर्म को सेपरेट के लिख लेना पड़ेगा तभी हर क्वेश्चन को सेपरेट लिखना पड़ेगा, मतलब? सर सेकंड टर्म में डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है ना. हाँ, फिर? सर उसके बाद निकाल सकते हैं. No, 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 no. You miss again thing. बताओ क्या करना पड़ेगा? Anyone else? Devrat, are you there? बताओ क्या करेंगे? हो या नहीं क्लास में? बताओ क्या करेंगे अगर हो तो. Please, you should always remember the eigenstate of Lz is 1 upon root 2 pi e to the power im phi. This is your normalized state. किया था ये? यस सर. यस सर. So what do you have to do? सर रूट 2 पाई से डिवाइड और मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई. जैसा पार्टिकल इन बॉक्स में करते थे वैसा ही वहां पार्टिकल इन बॉक्स में क्या होता था? रूट 2 बाई ए होता था ना, तभी तो किट फॉर्म में लिख पाते थे आप. यस सर. याद है प्रॉब्लम? नाउ यू कैन जस्ट कंपेयर द सेम प्रॉब्लम फॉर विद द पार्टिकल इन बॉक्स. ऐसा प्रॉब्लम हमने किया था 1 प्लस कॉस पाई एक्स बाई ए इंटू साइन पाई एक्स बाई ए था ऐसा, तो उसको रूट 2 बाई ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था. यू रिमेंबर ऑल दिस थिंग? यस सर. Same thing we have to do also. We have to take care of normalization.
So when we are taking care of normalization, then what will happen? This is 1 upon root 3 pi, and now you can multiply with 2 pi and you can divide with 2 pi, and this is e to the power I0 phi plus 1 by 2 is there. You have multiply with root 2 pi and you have divide with root 2 pi e to the power I2 phi plus root 2 pi e to the power minus 2i phi. Look at this beautiful problem. Kitna beautiful problem hai ye. Now, this whole thing, now root 2 pi and there is this thing can be written as 2 by 3 and this term can be written as phi 0, or if you want you can write it in a capital form, that is phi 0. And what will be this term? 1 by root 6. That value is phi 2 plus 1 by root 6. That value is pi minus 2. जरा चेक करो सही लिखा हूं. This will be your state psi. Yes? Yes, sir. देख लो, रूट 3 पाई यहां जाएगा तो 2 बाई रूट 4 अंदर चला जाएगा तो 12, 2 से 12 जाएगा, 1 by 6 is there. Yes? Now you can give the answer. What will be possible value of measurement? क्या possible value होगा measurement का? सर 0h का आएगा पहले वाले से, सेकंड वाले से तो probability of 0h cut is 2 by 3. Probability of 2h cut is 1 by 6. 1 by 6. Probability of minus 2h cut is 1 by 6. Again 1 by 6. 1 by 6. This is beautiful problem, isn't it? क्या सीखे इस प्रॉब्लम में? Represent state in the form of eigenstate. वो तो आपको आ गया, लेकिन अभी क्या सीखे? कहाँ मिस कर रहे थे? Normalization. नॉर्मलाइजेशन में किस तरह से नॉर्मलाइजेशन? प्लीज ऑलवेज ट्राई टू थिंक द कंप्लीट फॉर्म. जैसे पार्टिकल इन बॉक्स आता है तो आपको थिंक करना है रूट 2 बाई ए साइन पाई एक्स बाई ए. अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर आता है तो ये थिंक करना है रूट अंडर एम ओमेगा अपॉन पाई एच कट ई टू एच एन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पूरी कंप्लीट पिक्चर को देखो अगर आप फंक्शन फॉर्म में देख रहे हो तो. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल ये गलती कर देते हैं कि जस्ट यहां पर अगर आप इसे मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो बहुत ही बेवकूफ टाइप के आपके आंसर आएंगे, है ना? So this is one of the very nice problem ever asked into your examination and wonderful problem, है ना? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चले. Yes, sir. ओके. गुड. चलो so we have psi x y z and that value is sum n z exponential minus alpha x square plus y square plus z square. Okay, this is very simple. Ask in net 2019, net 2019. Okay, and obviously in December exam. Okay, so the question was very simple. Again the same logic is there. If L square and LZ is measured on psi
what will measurement with what will measurement, अभी सिर्फ what will measurement, बस इसी की बात थी। सो क्या करोगे बताओ? सर जेड को स्फेरिकल में लिखा जाएगा। सारे R को cos आप theta. स्फेरिकल में लिख लोगे, है ना? तो जैसे Yes, ही sir. आप स्फेरिकल में लिखोगे देन व्हाट विल हैपन, साई आर थीटा फाई, ये हो जाएगा। सो एन इज नॉर्मलाइजेशन, जेड क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, एंड ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस आर स्क्वायर, है ना? नाउ व्हाट विल हैपन इफ एलजेड इज गोइंग टू मेजर, पहले एलजेड का तो बहुत आसानी से दे दोगे आप आंसर, है ना? इफ एलजेड इज मेजर्ड व्हाट विल मेजरमेंट, So 0 का जीरो एच कट, बिकॉज ई टू द पावर आई एम फाई, एम की वैल्यू जीरो है, देयर इज नॉट एनी कंट्रीब्यूशन ऑफ एम हियर, एम इज इक्वल टू जीरो इज देयर, सो ऑब्वियसली m is equal to 0. So if you are measuring LZ, the measurement is 0 h cut. Okay. What about L square? What about L square? 1 होगा। L is equal to L 1. is equal to 1 Kyun? Because this is cos theta, and you can Yes, write sir. your cos theta as P1 cos theta, है ना? Legendary Yes, sir. polynomial. This will be nothing but what? P1 cos theta. So what will happen to this one? So L is equal to 1. So L square measure करोगे तो क्या मिलेगा? 2h का स्क्वायर। 2h cut square. So this will be your answer. Very simple. है ना? सर Straight. सेम क्वेश्चन सर सेम क्वेश्चन इस बार गेट में है। में आया था। हाँ। भाई जो पढ़ाऊंगा वही तो आएगा, और क्या आएगा? ठीक है। देखो फिजिक्स एक इतनी ब्यूटीफुल टॉपिक है ना कि अगर आप कॉन्सेप्चुअली तैयार करोगे तो सब आपके कॉपी में ही मिल जाएगी। ठीक है। यस सर। सर वो गेट में और भी आसान कर दिया था, वो सारे स्टेप दे दिया था सर। वाई एल 1 0 1 माइनस 1 तो वो लिखना one- चाहिए ना, लिखना चाहिए आपको। वो इसका कोई टेस्ट थोड़ी ले रहा है कि आप क्या क्या याद रख Yes, सकते sir. हो। आपको हमेशा ही ये इस चीज की टेस्ट ली जाएगी कि आपको क्या अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो डोंट ट्राई Yes, टू sir. मग अप द थिंग, ट्राई टू अप्लाई। मेरे पास कोई नोट्स नहीं होते हैं, नॉट एनी नोट्स, बट फॉर्चुनेटली और आई डोंट नो फ्रॉम गॉड ग्रेस आई कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट, Yes, sir. है ना? सो आपके अंदर पूरी स्टोरी, वेन एवर यू सी द प्रॉब्लम, सी जस्ट लाइक अ मूवी, कि पूरी स्टोरी क्लियर है कि नहीं आपको। ओके, जस्ट लाइक रीडिंग जस्ट अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरी बुक, डिफरेंट स्टोरी। हर प्रॉब्लम की एक अपनी स्टोरी होती है, उस स्टोरी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन यू कैन इजिली अप्लाई। और क्वांटम मैकेनिक्स में तो ब्यूटीफुल पार्ट ये है कि हर जगह वो 5 पोस्टुलेट्स ही अप्लाई होंगे, है ना? Yes, sir. सिस्टम अलग अलग हो जाएगा बट अप्लाई तो वो 5 पोस्टुलेट्स ही होंगे आपके पास। ये बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट है क्वांटम मैकेनिक्स के साथ। ओके, चलो। सो दीज आर सम गुड क्वेश्चन। और प्लीज आप ये मत सोचना कि अभी ये एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम खत्म हो गया है। वी विल अगेन कम बैक। इस बार मैंने पूरी की पूरी स्ट्रेटजी जो है क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाने की चेंज की है। ठीक है। सो दिस विल बी, अब मैं स्पिन करेंगे, स्पिन करने के बाद अगेन वी विल कम बैक टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंड ऑल दिस थिंग, एंड वी विल गो टू द थर्ड लेवल ऑफ क्वेश्चंस, जहां पर ग्रुप थ्योरी का इन्वॉल्वेशन होता है, यूनिटरी मैट्रिक्स का इन्वॉल्वेशन होगा, वहां पर हम देखेंगे, है ना? इन्वॉल्वमेंट होगा, है ना? इस तरह की बात करेंगे। चलो, लेट्स गो फॉर अ लास्ट वेरी रूटीन प्रॉब्लम। चलो, दिस इज जस्ट अ रूटीन प्रॉब्लम, है ना? आपको इस तरह के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करने चाहिए। ऊपर जा रहा है, हम्म? ऊपर जा रहा है सर। अभी नीचे आ जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो? अब नीचे आ गया।
आगे आगे चलो सॉरी, इसको 1 1 कर लो, 1 0 कर लो, 1 -1 कर लो, है ना? So this is your state psi, and obviously what is this kit? This kit is LM kit, common eigenstate, eigenstate of L square and LZ. So what you have to do? You have to just find, क्या निकालना होगा बताओ? You have to just find expectation value of Lx and expectation value of Lx square. Okay? So if I am talking about Lx, then obviously I have to talk about L plus and L minus. So पहले हम क्या काम कर दें? We have to calculate L plus psi, है ना? What will be this value? बताओ, Zero. अभी तुरंत किया था. Zero. 0. What will be this value? 1 minus 1. Very good. And root 2 h cat is there. Yes, sir. 1 L plus है तो 1 1 होगा, है ना? Not -1. What will happen to this one? Root 1 by 6. Root 2 Root 2 h cat, ये क्या हो जाएगा? 1 and 0. 0. ठीक है. Lx स्क्वायर में हमें क्या क्या चीज चाहिए? What is Lx स्क्वायर ऑपरेटर? Remember? L plus square, L minus square plus 2 L square minus LZ square by 1 by 4. यही है ना? याद है या नहीं चीजें? Yes, sir. ठीक है. Lx स्क्वायर. सो हमें L प्लस स्क्वायर भी यहीं पर निकाल लेते हैं. ठीक है. तो यू कैन कैलकुलेट L प्लस स्क्वायर psi. What will happen to this one? 0. 0. What will happen to this one? 2 h cut 1 1. Root 2 h cut, है ना? सो 1 by root 6 root 2 h cut रहने देते हैं, फिर से root 2 h cut आ जाएगा और ये कहां चला जाएगा? 1 और 1 पर. वेरी गुड. नाउ L माइनस आई, बताइए ये कहां जाएगा? 1 by root 6 क्या हो जाएगा? ये 1 0. root 2 h cut, that is what? 1 0. ये कहां चला जाएगा? root 4 by 6 root 2 h cut 1 minus 1. What will happen to Minus this one? That is 0. Very good. 0. Now अब हमें क्या देख लेना चाहिए? L माइनस स्क्वायर भी देख लेना चाहिए. ठीक है. चलो. सो L माइनस स्क्वायर के लिए क्या आएगा? This will be 1 minus 1 and this will be 0. So 1 upon root 6 root 2 h cut root 2 h cut 1 minus 1 and this term is 0. Are people happy? है ना? चलो. Now let's go for calculating expectation value of Lx. That means 1 by 2 L plus का expectation value और L minus का expectation value. यही होगा ना? चलिए. What will be expectation value L plus? L plus के लिए जाएंगे तो this will couple to what? ये किससे कपल करेगा? First term से. फर्स्ट टर्म से. क्या आ जाएगा ये? बताइए. So इधर से 4 साई by 1 by 6 सॉरी रूट अंडर 1 by 6 रूट अंडर 4 by 6 और क्या आ जाएगा? रूट 2 h कट, है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके. सेकेंड टर्म किससे कल जाएगा? इसी के साथ, है ना? दिस 1 0 विच कपल टू दिस वन. सो व्हाट यू हैव? रूट 4 by 6 Root 1 by 6. रूट 1 by 6 रूट 2 h कट. दिखाई दे रहा है? ठीक है ये. चलो
ये तो इसका कहानी हुआ, L माइनस की कहानी लिखते हैं, अभी प्लस और आएगा, हाफ इज ऑलवेज देयर. ओके, सो नाउ नेक्स्ट कहानी क्या होगी? L माइनस, दिस इज कपल टू सेकंड टर्म, Second. this सेकंड one. टर्म के Second term. So you have 4/6 root 1/6 and then रूट 2h का root 2h cut plus this is going to couple to this Third. one, थर्ड टर्म third term, 1/6 4/6 root 2h cut. So I think the expectation value of Lx is that all number are same hai? Yes. So this is 1/2 root 2h cut and into 1/6 into 4/6 into 4 लिख सकते हैं ना? Yes, sir. तो क्या आ जा रहा है वैल्यू ये? So that is 4 root 2, ये 2 से 2 चला गया, ये 2 ले लेगा, तो that is what? 4 root 2 upon 6. So that is 2/3 root 2 h cut, है ना? H cut is also यस there. सर आ रहा है ये? 2 रूट 2 बाय h का यस सर 2 root 2 by, ठीक है? So this is your 2 root 2 by Yes. h cut. Okay. Now let's try to go for expectation value of Lx square. ठीक है? तो Lx square पर आने की कोशिश करते हैं. यहां तक क्लियर है ना? Just you can check calculation. I think calculation सही होना चाहिए. सही है? Yes, sir. ओके. सही है सर कुछ गड़बड़ है? नहीं सर सही है सर सही है. गो, वेरी गुड. सो ये तो हो गया. अब हमें Lx स्क्वायर की बात करनी है. सो Lx स्क्वायर की जब हम बात करेंगे तो हमें क्या करना होगा? वी हैव टू टॉक अबाउट Lx स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू मीन्स 1/4 L प्लस स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू L माइनस स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू प्लस 2 L स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू एंड माइनस LZ स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू. यू रिमेंबर ऑल दिस थिंग फॉर्मूला? चलिए, Yes. दिस विल बी मच इजियर. सो Lx स्क्वायर 1/4 L प्लस स्क्वायर. सो L प्लस स्क्वायर ये किसके साथ कपल करेगा? फर्स्ट टर्म का सर फर्स्ट टर्म के साथ. तो क्या आ जाएगा? 1/√6 1/√6 √2 h cut. सॉरी, दैट इज 2h cut स्क्वायर, है ना? ठीक है? क्लियर है ये? यस चलो, सेकंड वाला टर्म किसके साथ कपल? L प्लस ये किसके साथ कपल करेगा? सर थर्ड टर्म का सर Third term. थर्ड टर्म के साथ कैलकुलेट कपल करेगा. तो क्या हो जाएगा ये? 1/√6 सेकंड वन बाय 1/√6 2h cut स्क्वायर. सेम आ रहा है? Yes, sir. यस सर अब ठीक है. नाउ व्हाट विल बी L स्क्वायर एंड नाउ 2 इज देयर. व्हाट विल बी आइगन एक्सपेक्टेशन वैल्यू L स्क्वायर हियर? फटाफट. सर 2h का स्क्वायर 2h cut स्क्वायर बिकॉज दिस इज आइगन स्टेट ऑफ L स्क्वायर, इजंट इट? यस सर इसे भी मेजर करोगे तो 2h cut स्क्वायर, इसे भी मेजर करोगे 2h cut, इसे भी मेजर करोगे 2h cut स्क्वायर. दिस इज 2h cut स्क्वायर. नाउ व्हाट इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ LZ स्क्वायर? Same. इतनी तेज पिटाई लगेगी ना. इसे मेजर करोगे तो m की सर- वैल्यू क्या मिलेगी? h का रहेगा और माइनस h का रहेगा और 0h का रहेगा इसके लिए 1h cut. तो LZ स्क्वायर के लिए क्या होगा? 1h cut स्क्वायर विथ प्रोबेबिलिटी Yes, sir, 1/6. यस सर So what will be expectation value of LZ square? 1/6 into 1h cut square. इसके लिए 0h का 0. जीरो हो जाएगा तो इसके लिए तो 0 ही हो गया. इसके लिए माइनस सर सर माइनस नहीं होगा माइनस माइनस अगेन प्लस 1h cut Yes, minus sir. 1h cut square minus 1h cut square.
because it is LZ square, na? So this is 1 by 6 h cut square, isn't it? So now you can calculate this number. देख रहे हो कितना मजेदार प्रॉब्लम हो गया ये. So 1 by 4 is there. So 2 by 3 and h cut square I can take outside. 2 by 3 plus, sorry, 2 by 6, na? 2 by 6 plus 2 by 6 plus 2 into 2 h cut square minus 2 by 6 h cut square. Yes, ठीक है ये. मैं 6 नीचे जानबूझ करके रहने दिया हूं. So what will be this? और h cut square तो बाहर ले लिया, तो h cut square हटा देते हैं. So this is your minus sign. क्या हो जाएगा ये वैल्यू? 2 plus 2 plus 2 into 2, 4 into 6, 24 minus 2 h cut square by 4. क्या आ रहा है? 26 by 4 ऐसा आ रहा है क्या? भाई 6 भी तो है, into 6. सॉरी यहाँ पर 4 आएगा. सॉरी दिस विल बी 4. So this is your 2. So this and this is cancel. So is that h cut square? Good number. Yes, sir. H cut square. h cut square है ना? So just आप नीचे का पार्ट भी देख लो. So this will be h cut square. It is very difficult to solve this type of problem in one board actually. Okay. So this will be something like h cut square. Okay. So this 4, this 2 is gone, and you have 4 cancel. So this value is h cut square. So this will be your answer. So now you can see the concept and the patience. Patience when you are doing the calculation, in a step by step you have to do each and everything. Okay. So I will stop here, and next class I will start the spin, which is also very interesting, but you understand all the logic behind the rotational dynamics or rotational symmetry in the merely spherical polar coordinate symmetry. Don't worry, we will again come back in this angular momentum part, but before that we will do a spin, and then again we will come back. ठीक है? चलो, so we have achieved basically level 2 of angular momentum, है ना? level 3 में अभी जाना है. ठीक है? ओके, डू प्रैक्टिस. और आपका अभी टेस्ट शेड्यूलिंग में कर रहा हूं, आपको टेस्ट दिया जाएगा, है ना? सो एकाएक क्लास स्टॉप करूंगा, लगातार 3 या 4 दिन आपके टेस्ट होंगे. सो यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दिस थिंग. क्लियर है ये? Yes, sir. ओके, चलो गुड. आज तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, मच बेटर. चलो, थैंक यू. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.